ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ 22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ DC ਤੇ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ EC ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਿਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਵੀ ਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਟੇਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਲੀਨ ਰਿਲਾਇਬਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਹਾਰਟੇਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਟੇਕ ਜੀ ਲਾਸਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਟੌਪ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ SJV ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਜਮੂਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਟੇਕ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ 7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਫ ਸੋਲਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 3 ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈਟੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ। ਹਾਰਟੇਕ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੋਲਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾइम सेक्टर बन रहा है तो लोगों को बिजली पहुंचे, क्लीन ते रिलायबल बिजली पहुंचे जी। ये हिमाचल में हमारा पहला सोलर प्रोजेक्ट है। ऐसे तो हमने नाथपा झाकरी में 1.3 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड लगाया था, लेकिन फ्लोटिंग के रूप में पहला सोलर प्रोजेक्ट है। और हिमाचल वाली प्रोजेक्ट जो ग्राउंड माउंटेड थी उसका बिजली हम खुद ही खपत करते हैं, और यहाँ जो बिजली बनेगी ये BBMB के थ्रू ग्रिड में जाएगी और BBMB के जो पार्टनर स्टेट हैं उनको दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने ले किया था 4 मार्च को, और उसके बाद हम जितना जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज इसका फर्स्ट एरे लॉन्च हो गया और आगे भी लॉन्च होता रहेगा लगातार। फिर साहब, आपको लगता नहीं आपकी तरफ से पहला फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, पहले तो ग्राउंड में लगाया गया था, आपको यहाँ चैलेंजेस मिलेंगे और आप सीखने का मिलेगा कुछ? हाँ, जरूर चैलेंजेज हैं, लेकिन उन चैलेंजेज को अब ओवरकम कर गए हैं। जब ये आज लॉन्चिंग हो गई तो इसके बाद हमारी जितनी डिज़ाइन की प्रॉब्लम थी या जो भी था, मटेरियल कहाँ से आएगा, किस तरह से, वो सारी चीज़ें टाई अप हो गई। तो अब ये चैलेंजिंग नहीं रहा। और ये जो लॉन्चिंग है, इस तरह की लॉन्चिंग हम ऑलरेडी ओंकारेश्वर में कर चुके हैं। उसमें करीब 40-50 मेगावाट के आसपास की लॉन्चिंग हो गई है, जो कि टोटल 90 मेगावाट की है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लोटिंग सोलर इस महीने के अंत तक ही 40-50 मेगावाट जो है वहाँ पर ओंकारेश्वर में कमीशन कर देंगे। और ये जो है इसका हमने टारगेट जून तक रखा है कि जून 2024 में कमीशन कर देंगे, और कोशिश पूरी हमारी रहेगी और उम्मीद भी है कि ये कर पाएंगे। जैसे आपने बताया कि BBMB को इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है, पावर स्टेट को, इसकी देखरेख किसके जिम्मेदारी है? ये देखरेख हमारे SJVN के अंदर ही रहेगा। हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है SGL, वही उसकी देखरेख। So SJVN is fully committed for this transition of energy, and for that we have created, SJVN has created a fully owned subsidiary, SJVN Green Energy Limited. So all the renewable business are being taken care by SJVN Green Energy Limited. So we have, as on date, SJVN Green 7.2 gigawatt of RE portfolio, and we are around 2.2 gigawatt of projects are under implementation. So this project is one of these projects that is under implementation, and this 15 megawatt projects we have backed through the reverse auction process at a tariff of 3.26 from BBMB, and this project will be commissioned by 30th of June. So this is our first floating project, that is we are targeting for 100% commissioning. The another, what our Director Finance SJVN said, that is in Omkareshwar, that will be also commissioned simultaneously. In May, that will also be commissioned. So we have 2 floating solar projects. Apart from this, we are also constructing one, you might have heard, 1000 megawatt single location project in Rajasthan, that is Bikaner. That is the India's biggest single location solar power project. So altogether, by the end of this financial year, we will be having around 2.5 gigawatt projects under operation. So it will boost to our top line, the revenue, etc. And all together, and we are also targeting to add around 1.5 to 2 gigawatt projects annually. So every year we'll be adding 1.5 to 2 gigawatt projects. Okay, so by the end of 2030, our
RE portfolio would be in the range of 16 gigawatt. So SJVN is continuously striving to work for the transition of energy and in the endeavor of Government of India to make it this carbon free. Thank you. So there are so many challenges about that, diesel people or cold weather and water. What do you say? Regarding floating? Yeah. Floating, what is there? The main challenge is design part. Actually, the fluctuation in the water level. That is the main challenge. So what we do in the design while going for the design, we take care in the margin in the anchoring and mooring system. You mean the design is the perfect? Yes, design should be perfect. Otherwise, what will happen? These arrays, what we have launched today, it may go here and there. Yes. So fixing the arrays in its position is very, very important. And driver safety? And driver safety, we take all the safety precautions, etc. All the protocols would be there, and everybody will follow those protocols. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।